वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ मैट्रिक स्पेसेस वी वर टॉकिंग अबाउट कॉम्पैक्टनेस और इसी कड़ी में वी आर गोइंग टू डिस्कस some characterization of compactness in this lecture. We know from the real analysis the Bolzano-Weierstrass property that whenever we have an infinite bounded set then this set must have a limit point. Okay. और अगर हम सीक्वेंस की सेंस में बात करें तो हमें पता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन दी सेट ऑफ रियल नंबर हैज़ अ लिमिट पॉइंट और वेन एवर किसी भी सीक्वेंस के पास कोई लिमिट पॉइंट है इसका मतलब उस सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस है दैट इज कन्वर्जिंग टू दैट लिमिट पॉइंट. Okay, so let me write first these kind of statement and then we will study these Bolzano-Weierstrass kind of property for the compact metric spaces. Okay, so we know the Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी. ओके, अगर हम सेट्स के बारे में बात करें तो व्हाट वी कैन से सेट के लिए अगर हम कहें तो वी कैन से एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बाउंडेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस को डिस्कस किया था, अब वहीं से ही हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करके कुछ अलग कैरेक्टराइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट. ठीक है, ये हम सेट ऑफ रियल नंबर में बात कर रहे हैं. If we talk about the Bolzano-Weierstrass property for the sequences, then you can say that every bounded sequence has a convergent subsequence और ये जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है इसकी जो भी लिमिट बनेगी दैट विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस ओरिजिनल सीक्वेंस. ओके, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इन आर. अब यही इसी तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम मैट्रिक स्पेस में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो यू कैन से जो भी कंटेंट है इस लेक्चर का दैट इज़ द एनालॉगस ऑफ द Bolzano-Weierstrass property from the set of real number. Okay, so in this context let us have a proposition 5.2.1 and it says let x comma d be a metric space then we have two equivalent statements. Then the following statements are equivalent. Okay, so first statement is every infinite set in x comma d has at least one limit point in x. Okay, this is the first statement. Another is every infinite sequence in x comma d contains a convergent subsequence. ठीक है, so let us write the proof.
प्रूफ में हम सबसे पहले इसको कंसिडर करेंगे और फिर इसको लेकर आएंगे, फिर हम लोग इसे कंसिडर करके वी विल ट्राई टू प्रूव द स्टेटमेंट फर्स्ट. नाउ in the first approach we are going to prove that one implies second. Okay, इसके लिए we will take that every infinite set in x comma d has at least one limit point. Okay, so let every infinite set in x comma d has at least one limit point. Okay, this is what we have in x. Okay, अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जब भी कोई इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है. तो इसको शो करने के लिए वी विल कंसीडर अ सीक्वेंस इन x. सो लेट दिस x n where n is greater than equals to 1 is a sequence in x. okay, then we will show कि ये जो sequence है इसका एक convergent subsequence है. okay, so now we have case 1 and this is about that if the set x1 comma x2 comma and so. okay, x3 comma and so the set is finite. अब हमें पता है सीक्वेंस में जो मेन रोल है वो टर्म्स का होता है और किसी भी सेट में हम सेम टर्म्स को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं. तो इस सेट का फाइनाइट होने का सेंस क्या है? सपोज हमारे पास ये जो पर्टिकुलर सेट है x1 x2 x3 वाला, ये सेट ऐसा हो, ठीक है. जैसे कि सपोज वी आर हैविंग दिस वन 1 5 6 8 9, इस तरीके से हमारे पास कोई वैल्यूज़ है और हम कह रहे हैं कि ये जो भी सीक्वेंस है इसकी हर एक टर्म इनमें से ही कोई टर्म है. ठीक है, इसका मतलब ये 1 हो सकता है, एक बार आया हो, 2 बार आया हो, कितनी बार भी आ सकता है, 5 भी और इस तरीके से. बट वी आर श्योर क्योंकि हमें एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर बनाना है तो इनमें से कम एक पॉइंट तो हमें ऐसा मिलेगा ही, एक ऐसा मेंबर इसमें से मिलेगा ही दैट गोइंग टू बी रिपीट इनफाइनाइटली. राइट, हो सकता है ये 5 इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू हो सकता है 8 इनफाइनाइट टाइम्स की वैल्यू हो सकता है 5 और 8 दोनों ही हो, है ना. तो सीक्वेंस बनाने के लिए इनफाइनाइट टर्म्स से, फाइनाइट सेट से हमें एक सीक्वेंस बनाने के लिए वी मस्ट हैव कि इनमें से कम एक टर्म इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो. ओके, अब जब वो टर्म रिपीट हो रही है तो क्या हम उस टर्म वाले जिसकी वैल्यू सपोज 5 है ना, हम मान लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है उसके अंदर 1 6 8 9, इसके बारे में वी आर नॉट श्योर, बट ये जो 5 है दैट कमिंग इनफाइनाइट टाइम. ओके, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है इसमें इनफाइनाइट टाइम टर्म्स जो है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं उसकी वो 5 बन रही हैं. जैसे कि हो सकता है फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म या फिर 7th, देन 9th, देन वी हैव दैट 11th टर्म, देन 31st टर्म्स. इस तरीके से कुछ टर्म्स जो कि इनफाइनाइट नंबर में वो 5 है. अब जब हम इन सारी टर्म को अगर सेग्रीगेट करें, इनको अलग कर लें, तो क्या हमें एक कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं मिल गया? और कांस्टेंट सीक्वेंस तो हमेशा अपनी कांस्टेंट वैल्यू पर ही कन्वर्ट्स करता है और ये जो सीक्वेंस है ओरिजिनली हमारे इस पेरेंट सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस है. Okay, so in that sense we will have a convergent subsequence. Okay, so let me write a sequence so that you can easily visualize this. Suppose we have this kind of scenario. Okay, हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जैसे 1 5 4 1/9 5 3 8 9 1/11 6 5 3 5 1/25. So here you can see this term 5 is coming infinite time. Okay, so among these
numbers we have that this 5 is coming infinite times. तो हम ये कह सकते हैं कि हम अब एक नया सब सीक्वेंस बना रहे हैं जिसके अंदर फर्स्ट जो टर्म है दिस इज आर एक्स एन 1 और ये जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है। फिर हमने दूसरी टर्म बनाई और इसके अंदर हमने कहा एक्स एन 2 और ये हमने लिया 5 और ये हमारे सब सीक्वेंस की थर्ड टर्म है एक्स एन 3 and this is again going to be 5 and so on this is our x and 4 ये सब सीक्वेंस बना रहे हैं ये भी हो गया 5 ठीक है। तो here you can see we have a constant sequence and this will be convergent। so हम ये कह सकते हैं ना कि इस सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है इन केस वे दिस सेट इज फाइनाइट। ओके, फाइनाइट सेट होने का मतलब है केवल फाइनाइट नंबर से ही इसके अंदर अपीयर हो रहे हो फॉर द ईच value of each term of this sequence. Okay, so let me write the scenario. So you can say in that case, okay, then one of, or let me write at least one of, okay, this will be more appropriate. Then at least one of the point, ये हमारे पास अलग सिनेरियो है ठीक है, वन ऑफ द पॉइंट्स से एक्स आई नॉट। ओके, जैसे यहाँ पर एक्स आई नॉट क्या हो गया 5 है ना, हमने सब सीक्वेंस बनाया ना एक्स आई नॉट विल बी इक्वल्स टू 5 satisfies that x I not is equals to xj। now this xj is our 5 ठीक है, for infinitely many j इन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पर जो सब सीक्वेंस है इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सेकंड टर्म, then we have fifth term and then sixth, seventh, eighth, ninth, 10th and 11th term and then we have 15th term। ये सारी टर्म 5 के इक्वल है। ओके, सो ये हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया और hence we will have a constant subsequence। so hence the constant sequence, और ये हम किससे बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 है तो ये वही एक्स आई नॉट को लेके हम ये सीक्वेंस बना रहे हैं इज सब सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस एक्स एन where n is greater than equals to 1 which converges to the point x I not। ठीक है, so thus we have a convergent subsequence।